Hello everyone. So today we are starting chapter 6 of our history book of WBBSE board. The chapter name is Peasant, Working Class and Black Movements in 20th Century India. If you are watching this video for 2026 board exam, then you are already late. This is December month. Today is December 30. I know I'm making this video late, but no problem. You can still watch this video and understand the concept. And if you are watching and if you are the student of 2027 batch and if you are watching in 2026, then very good. Okay, you prepare for your 2027 board exam. Before starting this video, let me tell you, since this chapter is very long, you can see in your book, it starts from page number 126 and it goes up to 158. So that is why I have divided this chapter in 4 parts, okay, means 4 videos. This is part 1 and after this video, there will be 3 more parts I will upload. Okay, this is part 1, part 2, part 3 and part 4. 4 videos I will upload. And in those all 4 videos, every video like this video and rest the 3 videos, each video will have 2 sections. Okay, 2 sections means first section and second section. It means the entire video will be of 15 to 20 minutes. Okay, the duration of the video, whole video of the duration of each whole video will be of 15 to 20 minutes and it will be in 2 sections. In section 1, the explanation, the video will be in Hindi, and in section 2, the video will be in English. Why in Hindi and English both? Because if you are an English medium student, you can watch the English one, and if you are a Hindi medium student, you can watch the Hindi one. But I'll suggest you to watch both. Why? Because if you are an English medium student, then watching Hindi video will make your concept strong. You will understand the concept, and when you will watch the English version video, it will help you for answer writing, because all the text and everything will be in English. So I suggest you, if you are a Hindi medium student or English medium student, you should watch both. जब हम भारत की आज़ादी की कहानी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर कुछ बड़े नेताओं के चेहरे ही सामने आते हैं, है ना? लेकिन असली कहानी तो उन लाखों करोड़ों आम लोगों की है जिन्होंने पहली बार अपनी आवाज उठाई। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी की लड़ाई, जो शुरू में कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी, धीरे धीरे एक पूरे देश का आंदोलन बन गई। इसमें किसान, मजदूर, आदिवासी सब शामिल हुए और यकीन मानिए, हर किसी की अपनी एक जबरदस्त कहानी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 1900 के शुरुआती सालों की। उस वक्त जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वो चुनौती ये थी कि यह आंदोलन आम जनता से, मतलब कि देश की बड़ी आबादी से जुड़ ही नहीं पा रहा था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था? देखिए, इसकी कई वजह थी। एक तो आंदोलन का जो तरीका था, उसमें कुछ धार्मिक रंग था, जिससे बहुत से मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। दूसरा, ये आंदोलन भद्र लोग, यानी पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोगों के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाया। और तो और, जो स्वदेशी सामान खरीदने की बात होती थी, वो अक्सर इतने महंगे होते थे कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता था। तो कुल मिलाकर नेताओं और जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। और बस यहीं पर एंट्री होती है मोहनदास गांधी की। 1915 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। उनका तरीका अलग था। उन्होंने बड़े बड़े मुद्दों की जगह स्थानीय अन्यायों पर, लोकल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना शुरू किया, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ा जा सके। और उन्होंने अपने इस नए तरीके को टेस्ट करने के लिए एक के बाद एक 3 बड़े आंदोलन किए। इन्हें गांधी जी की पहली 3 बड़ी परीक्षाएं भी कह सकते हैं। पहला 1917 में चंपारण, बिहार के गरीब नील किसानों के लिए, फिर 1918 में खेड़ा, गुजरात के जमीन मालिक किसानों के लिए, और उसी साल अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए। मतलब 3 अलग अलग जगहों पर 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए उन्होंने अपने सत्याग्रह के हथियार को आजमाया। और इससे ये साबित हुआ कि उनका ये तरीका कितना असरदार और फ्लेक्सिबल था। अब चंपारण की बात करते हैं। ये मुद्दा गांधी जी तक कौन लेकर आया? एक स्थानीय किसान, जिनके नाम था राजकुमार शुक्ला। और मसला क्या था? एक शोषण करने वाला सिस्टम, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहते थे। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे अंग्रेज बागान मालिक बहुत ही कम दाम पर खरीदते थे। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। जरा इन 2 किसान आंदोलनों को देखिए, चंपारण और खेड़ा। दोनों कितने अलग थे। चंपारण में गरीब किराएदार थे जो अंग्रेज बागान मालिकों के खिलाफ लड़ रहे थे,
वहीं खेड़ा में अमीर जमीन मालिक किसान थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ टैक्स को लेकर लड़ रहे थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि जिसे हम किसान कह देते हैं वो कोई एक जैसा समूह नहीं था। उनकी अपनी परेशानियां और अपनी लड़ाइयां थी। तो इन छोटी छोटी स्थानीय जीतों ने एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी थी। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का संदेश पूरे देश में फैला तो वो एक ऐसी आग बन गया जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा। उसने अपना ही एक अलग रूप ले लिया। लोगों के बीच ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि भाई गांधी राज आ गया है। अब इसका मतलब हर किसी ने अपने अपने हिसाब से निकाला। ज्यादातर लोगों ने ये समझा कि बस अब उनकी सारी मुसीबतें खत्म, चाहे वो अंग्रेजों का टैक्स हो या जमींदारों का जुल्म। और इसी गांधी राज की अपनी अपनी समझ ने देश भर में अलग अलग आंदोलनों को जन्म दिया। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र के साथ किसानों ने बेगार यानी जबरदस्ती की मजदूरी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, तो दूसरी तरफ आंध्रा में आदिवासियों ने अंग्रेजों के जंगल कानूनों के खिलाफ जोरदार वन सत्याग्रह शुरू कर दिए। मतलब हर जगह स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय आंदोलन के नारे के साथ जुड़ गए। और ये आंदोलन अक्सर कांग्रेस के बड़े नेताओं की सोच से कई ज्यादा रैडिकल, कई ज्यादा उग्र थे। और ये जो मतभेद था उसे अल्लूरी सीताराम राजू का यह बयान बहुत अच्छे से दिखाता है। राजू गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, उनकी तारीफ करते थे, लेकिन उनका साफ मानना था कि आज़ादी के लिए हिंसा जरूरी है। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बाकायदा गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। तो चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। किसानों का ये जो गुस्सा फूट रहा था, इसने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक बहुत बड़ी खींचतान को सामने ला दिया। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस उन आंदोलनों का पूरा साथ दे रही थी जो जमीन मालिकों के हक में थे, जैसे 1928 का मशहूर और कामयाब बारदोली सत्याग्रह। लेकिन जब बात सबसे गरीब किसानों या बटाईदारों के हक की आती थी तो पार्टी के कदम ठिठक जाते थे। तो असल में मामला क्या था? बात ये थी कि कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो खुद जमींदार थे या फिर जमींदार घरानों से उनके गहरे ताल्लुकात थे। जाहिर है इससे हितों का टकराव होता था। वो एक हद से आगे जाकर जमींदारों के खिलाफ गरीब बटाईदारों के आंदोलनों का साथ नहीं दे सकते थे। और कांग्रेस की इसी हिचकिचाहट ने, मतलब जमींदार वर्ग को नाराज न करने की इस नीति ने, राजनीति में एक खाली जगह पैदा कर दी, एक वैक्यूम। और इस खाली जगह को भरने के लिए आई नई, ज्यादा रैडिकल आवाजें। राजनीति में एक नई सोच की लहर आई जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर ही एक वामपंथी विकल्प, एक लेफ्ट ऑल्टरनेटिव को जन्म दिया। कांग्रेस की नीतियों से जो निराशा पैदा हुई थी, उसी का सीधा नतीजा था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बनना। इसकी कहानी नासिक जेल से शुरू होती है, जहां 1933 में कुछ नेताओं ने इसका आइडिया सोचा और फिर मई 1934 तक आते आते पटना में ये पार्टी बाकायदा बन भी गई। तो ये सोशलिस्ट थे कौन? ये जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली जैसे युवा और जोशीले राष्ट्रवादी थे। उनका मकसद सिर्फ आज़ादी पाना नहीं था, वो आज़ादी के मायने ही बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस ज़्यादा रैडिकल नीतियां अपनाए और उनका पूरा फोकस था आम जनता के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय पर। और ये बदलाव सिर्फ बड़े नेताओं के लेवल पर नहीं हो रहा था, ज़मीनी हकीकत भी बदल रही थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे नेताओं की अगुवाई में बिहार प्रांतीय किसान सभा जैसे ताकतवर किसान संगठन खड़े हो रहे थे, जो लाखों किसानों को अपने हक के लिए एकजुट कर रहे थे। और ये लोग अक्सर नए समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर काम करते थे। तो कुल मिलाकर आज़ादी की लड़ाई जो एक कहानी लग रही थी, वो असल में कई कहानियों का संगम बन गई। जैसे जैसे नई नई आवाजें उठने लगी, सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि आज़ादी कैसे हासिल करनी है। अब एक बड़ा सवाल ये भी था कि ये आज़ादी किसके लिए होगी। और ये वो सवाल था जिसने न सिर्फ उस दौर की राजनीति को बल्कि आज़ाद भारत के भविष्य को भी आकार दिया। You know, we often picture India's freedom struggle as this one big unified wave of protest. But for a long, long time, it really wasn't. It started out as a movement led by the educated elite, who were pretty disconnected from the millions of people they were trying to represent. So this is the story of how all of that changed, how farmers, factory workers, and tribal communities went from being on the sidelines to being the main players in their own fight for freedom. Yeah, this image says it all, right? This is the power we think of. But behind this powerful image was a huge hidden weakness. The early nationalist leaders, well, for all their passion, they were basically just talking to each other.
They weren't speaking the language of the common person, and they definitely weren't talking about the problems that kept people up at. And that right there is the big question we're going to unpack. How do you bridge that massive gap? I mean, what does it actually take to convince someone who's worried about where their next meal is coming from or about some crushing debt that this big, far-off idea called Swaraj, or self-rule, is their fight too? So to really get the transformation, we have to start with the original problem. And the early Swadeshi movement in Bengal is the perfect case study. It was truly a movement that was apart from the masses. And this really breaks down why it just didn't connect. It wasn't one single thing, you see. The movement's really strong Hindu symbolism, it pushed away a lot of Muslims. All the upper caste imagery alienated lower caste communities, like the Namasudras, who had their own struggles for dignity. The leadership was almost entirely the Bhadralok, the educated landowning class, who sometimes even strong-armed peasants into joining. And maybe most importantly, it just didn't offer any real plan for making life better for the very people it needed on its side. And then everything changes. Mahatma Gandhi comes back to India in 1915, and he has a completely different playbook. Instead of making these grand national speeches, he starts small. He focuses on very specific local injustices to build trust and show people he's on their side. And just look at how fast he moves. It's one campaign right after another. In 1917, he's in Champaran, fighting for exploited indigo farmers. A year later, 1918, he's in Kedah, backing landowners against unfair taxes. And in that same year, he's in Ahmedabad, standing with textile workers against the powerful mill owners. He's showing everyone that his methods work, whether you're in a village or a city. So in Champaran, the whole fight was about this thing called the tinkathia system. Just try to imagine this. You're a farmer, and the law forces you to grow a crop you can't even eat, indigo, on a big chunk of your own land. And then you have to sell it at a ridiculously low, fixed price to European planters. It was exploitation, plain and simple, written into law. And Gandhi didn't just protest. He interviewed 8,000 farmers, building an ironclad case that eventually got the whole system thrown out. And these two pictures, side by side, they just perfectly capture how flexible his approach was. On the left, you've got the Kedah Satyagraha, a fight for landowning peasants out in the countryside. And on the right, the Ahmedabad Strike, a classic labor dispute in a big industrial city. Two totally different worlds, but the strategy was the same: organized, nonviolent resistance to win a clear, concrete victory. The Ahmedabad strike is like a masterclass in his strategy. Let's walk through it. The workers, they want a 50% raise. Gandhi, ever the pragmatist, convinces them to ask for a more realistic 35%. The owners say no way and lock them out. So when the workers start to lose hope, what does Gandhi do? He pulls out his ultimate weapon for the very first time, a fast unto death. That puts immense moral pressure on the owners, and it works. They're forced to the table, and the workers get their raise. It's strategic, it's disciplined, and it was incredibly effective. So, with these local wins in his pocket, Gandhi was ready to go big with the non-cooperation movement in 1920. But here's where things get really interesting. The message that was sent out by the leadership was not always the message that people on the ground heard. This idea of a coming Gandhi Raj, or Gandhi's rule, well, it took on a life of its own. And you can see the split right here. On the one hand, you had the official Congress plan, very controlled, very nonviolent, boycotting schools, courts, and so on. But on the ground, it was a totally different story. For peasants, non-cooperation meant an immediate end to paying taxes and rent. It was a direct challenge to the power of landlords and the police. In some villages, people just went ahead and declared that Swaraj was already here. And they used their own powerful, age-old forms of protest. In places like Awadh, refusing to perform begar, that's forced unpaid labor, was a direct shot at the heart of the whole feudal system. And they got even more creative with things like the Nai Dobi Bond. This was a social boycott where people like barbers and washermen would just stop providing their services to oppressive landlords, basically cutting them off from the community. Yeah, the belief in Gandhi's power just ballooned into something almost mythical. This detail from Jalpaiguri is just incredible. Santal tribesmen, wearing these simple white Gandhi caps, actually attacked the police because they believed the caps would literally make them bulletproof. It just goes to show you the immense, almost supernatural power that Gandhi's name had for people, giving them the courage to do extraordinary things. But then, in 1922, after a violent incident at Chauri Chaura, Gandhi abruptly called the whole non-cooperation movement off. And that left this huge power vacuum. All this energy that had been unleashed had to go somewhere, and it went in some very, very different directions.
One of those directions was straight into armed rebellion. The Rampa Rebellion in Andhra is a perfect example. Led by this charismatic folk hero, Alluri Sitarama Raju, this was not a peaceful protest. We're talking about a full-on 2-year guerrilla war fought by tribal communities against the British. It was a serious military conflict that took elite colonial forces to finally put down. And Raju's own words really capture this split in thinking perfectly. He said, "I speak highly of Mr. Gandhi, but I have to say that violence is necessary." He admired Gandhi, he got the spirit of the national movement, but he came to a totally different conclusion about what it would take to win. Another path people took was formal politics, but outside of the Indian National Congress. You had the Praja Party in Bengal, which was for wealthy Muslim peasants, and the Unionists in Punjab, who focused on other farming groups. Both of them felt like, hey, the main Congress party just doesn't get our specific economic problems. So by the late 1920s, you've got these two major forces competing to lead this newly awakened peasantry. On one side, you have the Gandhian model, which is being refined and perfected. And on the other, you've got this new radical left emerging, arguing that Gandhi's approach just doesn't go deep enough. And it all comes to a head in a place called Bardoli in Gujarat. The spark? A massive 22% hike in land taxes slapped on by the Bombay government. That was all it took to light the fuse on what would become the perfect Gandhian peasant movement. And Bardoli was, by every measure, a huge success. Under the super-disciplined leadership of Vallabhbhai Patel, the peasants organized a complete and total boycott of the tax. They just refused to pay. It was so effective it became a national headline, and it forced the government to back down and admit the tax hike was unfair. Bardoli became the textbook example of how to win. But here's the million-dollar question. Bardoli was a victory, for sure, but it was a victory for land-owning peasants fighting the British government. What about the problems between tenants and their landlords, or between sharecroppers and the wealthy middlemen? The Bardoli model didn't really touch those deeper class conflicts simmering below the surface. And this is exactly where the left steps in. A new generation of leaders, people like Jayaprakash Narayan and Narendra Dev, they got really frustrated. They saw the Congress Party as being way too cozy with its wealthy landlord supporters, the zamindars. So in 1934, they formed the Congress Socialist Party. Their goal wasn't to leave Congress, but to push it from the inside, to force it to adopt a much more radical socialist agenda that would tackle class inequality head-on. So by the 1930s, the transformation was pretty much complete. The masses of India were no longer just watching from the sidelines. From Gandhi's local campaigns to tribal guerrilla wars to the rise of socialist peasant unions, they had become a powerful, irreversible force in Indian politics. The journey from an elite protest to a real mass movement had been made. But this awakening just opened up a whole new can of worms. The Indian peasant and the Indian worker had finally found their voice. But with all these competing ideas out there, the Gandhian path, armed struggle, regional parties, the socialist left, who were they actually going to listen to? That question, well, that would define the next and the final chapter of the freedom struggle.